Hello students, so here we are with the question set 3 for the chapter Metals and Nonmetals. So these are some important questions, just go through them and also do remember to subscribe the channel for regular updates. Now let's see the answers for the questions one by one. So we are drawing electron dot structures. Okay, electron dot structures क्या होते हैं? वो किसी भी element के लिए जो outermost shell में जो valence electrons हैं उन्हें show करता है. Right? So sodium, its symbol is Na. So you write Na here. Sodium में आपको पता है there is one valence electron. So one dot is shown here. Correct? Then oxygen has 6 valence electrons. So you are showing 6 dots around the symbol of oxygen, that is O. Magnesium में कितने होते हैं valence electrons? 2. So magnesium आप Mg symbol लिखोगे and you draw the 2 dots for the 2 valence electrons. Now let us see how sodium oxide is formed. Okay, Na2 हमारा कैसे form होगा? So आप दो Na atoms ले रहे हो, ठीक है? Outermost shell में there is one valence electron. तो आपने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया. ऑक्सीजन इज कंटेनिंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 डॉट्स हैं हमारे, ठीक है? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन हैज टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो होगा क्या? जो सोडियम के हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन फ्रॉम दिस सोडियम एंड वन फ्रॉम दिस सोडियम, इट विल बी डोनेटिंग इट टू ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के पास 6 थे तो 2 और आ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. Right? So this becomes Na plus, this becomes Na plus because it loses one electron, and this becomes O2 minus क्योंकि 2 electrons gain हो गए. So this way 2 sodium atoms and 1 oxygen atom combine to give Na2O. Right? Next we discuss the formation of MgO. ठीक है? Mg में 2 valence electrons हैं, oxygen में 6 valence electrons हैं. तो ये जो Mg के 2 electrons हैं ये donate करेगा oxygen को and oxygen accepts them. So it becomes Mg2 plus, this becomes O2 minus. So Mg plus O gives MgO. Okay. Now we identify the ions present in these compounds. So Na2O में sodium ions है Na plus, oxide ion है O2 minus, okay, and MgO में magnesium ion है Mg2 plus and oxide ion है O2 minus. So the next question is, why do ionic compounds have high melting points? हमने देखा था जो ionic compounds हैं उसमें positive and negative charged ions are held together by strong electrostatic forces of attraction. Okay, these are known as ionic bonds and we need a very high amount of energy to break these. ठीक है, वो energy हमें very high temperatures से मिलेगी. Okay, so when ionic compound has to convert to solid to liquid, so in order to overcome these strong attractions हमें बहुत high temperature चाहिए, that's why it's having high melting point. Thank you so much for watching the lecture.